दशकं 71 केशवद व्यो महासुरवतः यज्ञेषु सर्वेषु विनावकेशीः केशी सबे जोषि दुरिष्टबन्धो तं सित्तुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवादिरूप गन्धर्वदामेषु कदेभिरुषैः नादस्वमुद्भेजिदसर्भलोग भवद्विलोगावति गोपवाडी प्रमर्त्य बाबा पुनराप्तवत्वं दाक्षार्पिताङ्ग्रेस्तव दाक्ष्येष शिक्षेप वक्षो भुवि नामपादा भृगोपदाकाद कदां निसंह्य स्वेनाभिसख्यं तददीव मोहा प्रभञ्जयन्नस्य कुराञ्जलं त्राह अमुं सशिक्ष्मिद्दूरदूरं समुच्चिरोऽपि यदि मुच्छदेन क्रोधोक्षमाणा कादितुमातृदस्त्वां त्वां वाहदाण्डे कृतदी स्वहा दण्डं न्यदास्तस्य मुगे तदाने तत्रुद्धरित्यस्व सदोनुकदासुः स्वत्वान्नयाब्जैम महाख्यमाघा आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणा प्रास्तागने नुत्नैवा स्वमेधे कृदेद्धया वर्ष वसासुरेन्द्र तां दुष्टुकेशवनामधेयं कंसाय दे सौरिसुदस्त्वमुक्त्वा त्वं तां वदोक्तं प्रतिरुत्यवासा प्राप्तेन केशी क्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमिषुप्तदोभू कदाभिगोपैः सह काननान्दे निलायनक्रीडनलोलुभं त्वां मयात्मजा प्रापतुरान्मयोऽप्योः व्योमोभितो व्योमसरोवरोधि ससोरबालायिद्वैवल्लवेशीः सोरायुधो गोपि सुसूनपंसु गुहासु कृत्वा पितदेशिलाभि दयासु बुद्धा परिवर्तितो भो एवं विधैच्छा पुतकेलिभेदै आनन्दमूर्च्छा मुतुलाम्रजस्य पदे पदे नूननयन्स्य सीमा परात्मभूरन् भवने सभाया दशकं 72 अक्रूर आगमनम् कंसोदनारदिकिरा व्रजवासिनं त्वाह मार्गण्यद्रीणहृदय सहिगान्तनेयम् आहूय कार्मुखमचलदो भवन्तः आनेदुमेन महिने दहनादयाचिन् अक्रूषियेष भवदङ्घ्रिपरिच्छिराय दद्दर्शनाक्षममदा क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयै पुनरीक्षितुमुत्यदास्त्वाः आनन्दभारमधिपूरितिरम्पभार सोऽयं व्रतेन सकृति भवदो निवासं कच्छन्मनोरथगणात्वयि दार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरुभाय भयेन दैत्वं सम्प्राप्तयन् बदिन किञ्चिदभिव्यजानात् द्राक्ष्यामि वेदसहिते तहिदम्बुमांसं सम्प्राश्मिकं स्थितवति नाम परिष्वजेयं किं वक्षते सकलु मां क्वनुभीक्षदत्याः दित्यं निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूय क्रमादभुविसन् भवदङ्घ्रिभूतं बृन्दावनं हरिविरिञ्जसुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमभावन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दद भवत् विहृदिस्थलानि पांसुष्टवेष्टिदभवच्चरणङ्गिरेषु किं ब्रूमहे बहुजना हितताभिचादा एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं सगो भवनानि भवच्चिरत्र गीतामृतप्रसुधरकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोद सरिदेव किलोह्यमानो कच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासि तावत्तदर्श पशुदोह विलोकलोलं भक्तोदमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयक्रजवन्तमन्त ब्रह्मानुभूवधिरसिन्धुमिवोत्मनन्दम् सायन्दनाप्लवविशेषविविक्तगात्रो गौबीधनीलरुचिराम्रलोभनीय नादिप्रजन्दरभूषणचारुवेषो मन्दास्मिदातरवदौ सययुवां तदर्च दूरातुरात् समबृह्य नमन्दमेन मुद्भाय भक्तकुलमौलमितो मकुहन्
हर्षानमक्षिकिरः कुशलानुयोगी पाणिं प्रहिह्य सबलोत् हरं निनेद नन्देदसागममिताद रमस्त्ययित्वा तं यादवं तदुदिदां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपदिनिदेशकथं निवेद्य नानाकदाभिविहितेन निशामनैषी चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रबहागृहेदु राद्रागृहेण भवने किमु मैत्रिविन्दे दूर्दो विलम्बित इति प्रमदाभिरुच्चै आसङ्गितोऽनुसिमरु पुरनादबाह्य दशகம் 73 பகவத மதுராபுர யாத்ரா. निशमय्यतभासयानवार्ता प्रसुमाता पशुपालपालिकास्ता किमितं कदन्विदामा समवेदा परिदेविदान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनो कथमस्मा विसृजेत नन्यनादा पदन किमुदम् अवेवमासी तिदिदात्मद्गतमानसा विलेभो सरमप्रहरे प्रतिष्ठमान सह पितरा निजमित्रमण्डलै च परिदाबरं निदम्बिनीनां समयश्चं व्यमुमस्य सगायमेघम् असिरादुभयामि सिन्निदम्बे भविता साधुमयैव सङ्गमश्री अमृताम्बुनिधौ निजं जयिष्ये त्रिदमिद्यास्वसिता बधूरकाशी सविषादपरं सयाञ्जमुच्चै अतिदूरं वनदाभिरीक्षमाणा मृदुदद्धि च पादयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथो ननर्गितो भू अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा सानुकतोदवल्लभाना वनमात्मृहं विषण्णवृक्षं समितो यमुनाथडीमयासि नियमाय निमज्जवारिणी त्वा मभिवीक्षादरदेवि कान्तिनेह्य विवसो जनिकिन्मितं विभोस्ते ननु चित्रं तव लोकनं समन्दात् पुनरेषु निमज्ज पुण्यशाली पुरुषं त्वामपरमं भुजङ्गबोधे हरिकम्बुकदाम्बुजै स्फुरन्धं सुरसिद्घौ परितामालुलोके सदता परमात्मसात्स्य सिन्धो विनमग्न प्रणवन् प्रहारभेदै अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धो ऋणुवित्यापुलगावृतौ ययत्वा किमु शीतलिमा महाञ्जलेयन् पुलगोसावितसोदिदेन देन अधिहर्षनिरन्तरेण सात्रं रथवासि भवनसे पाहि मां त्वम्. दशकं 74 भगवत मधुरापुरी प्रवेशः. सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्घविगमे तत्रान्तदस्मिन् वसन् आरामे विहिदाचन सखिजनै यादा पुरीमीक्षितं प्राभो राजपदं शिरत्रुतिरध व्यालोककौतूहल श्रीपुंसोद्यतकन्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणोऽनुकिं तत्पादातुदिवत्सरागसुभगा तन्मूर्तिवत्योषित सम्प्राप्ता विलहद्भयोदरुचिरो लोला भवदृष्टिव हारिण्यै तदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्योलसिता कहौकरुचिः भद्रात्कलापाश्रित तासामागलयन् पाङ्गबलनैर्मोदं प्रहर्षात्बुध व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगं कञ्चेत्पडिं प्राप्तयन् कस्ते तास्यधिराजकीयवसनं याहीदितेनोतित सत्यतस्य करेण शीर्षमहृता सोऽभ्याभ्य पुण्यां कदी भूयो वायगमेघमाय तमिदिं दोषेण वेषोचितं तास्वां संवबदं निनेद सुकृतिं को वेद जीवात्मना
मालाभिस्तभगैस्त्ववैरभिपुनर्मालाकृदा मानिदो भक्तिं तेन वृदां दिदे चिदपरा लक्ष्मी स लक्ष्मीपदे कुब्जां जविलोचनां पदिपुनः हृष्वाङ्गरागे धया तद्दे साधु किलाङ्गरागमददा तस्या महान्मं कृती सिद्धतामृजुतामदप्रदयुधं कात्रेऽपि तस्या स्फुटं कृष्णन्मञ्जुकरेण तामुदनय तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवा तव विभो नाद्यन्तपापार्जना यत्किञ्चित्तदसे स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूल्यमाल्यादिकं कृष्णानकुसमानि किञ्चन दधा मार्गे निबत्ताञ्जलि नादिष्टं पदहाय दोत्यविपुला मातिं वृजामामि प्रभो येषामीति विमुक्त्य भावि भगवन् आलेबदात्याधया दूरात् कादरया निरीक्ष दशदि तं प्राविशो गोपुरम् आघोषानि मिमित्वदागममः हर्षोलसत्वेऽभिकाय भक्षोजप्रहलात्रयोरसमिषा तत्कीर्तिरत्नाङ्कधा आविष्टो नगरी महोत्सवितं कोदण्डशालां वृजन् माधुर्येण दुदेजुषा न पुरुषै दूरेण दत्तान्तरा स्वेग्भूषितमर्चितं वरदवोर्मामेति वादात् पुर प्राकृष्णा समरे भया किल समा काङ्क्राशिरभाङ्गाक्षीरभि स्वक्कं सक्षबणोत्सवस्य पुरद प्रारम्भदुर्योपम साबत्वं समहात्मभिस्तव विभो देवानरोमाञ्जय कंसस्यापि सवेबुदोस्तुदतिथा कोदण्डकण्डद्वयी चण्डाप्याहतरक्षिपूरुषरभै उद्गूरिदो भूद्वयः सृष्टर्दुष्टजनैः सदृष्टमहिमा प्रीत्या स भीत्या तदा सम्बच्चन् पुरसम्बतं प्रविचरन् सायं कदो बाडिका श्रीदाम्ना सह राधिका विरजहं खेदं वदन् प्रास्भवन् आनन्दन्नवदार्यकार्यकडनात् वादे स संरक्षमा दशकं 75 कंसवतः प्रादासन्द्रोद्भोज क्षितिपतिवससा प्रस्तुते मल्लदूर्ये सङ्गे राज्ञा समन्याभियष्कदे नन्दगोप्येऽभिहम्प्यं कांसे कौदादिरूढे त्वमपि सहबल चानुगृच्चारुवेषो रङ्गद्वारां खदो भू कुपितवकुलया पीडनकावलीडं पाविष्टा बेबि मार्ग धृतमिति वससा निष्ठुगर उत्तभूते अम्बुष्टस्प्रारणेतो अधिजगवशुषा हस्तिना गृह्यमाण केलीमुक्तादगोपी कुशकलसमं प्रत्तिनं गुम्बमस्य व्याहत्यालीयदा स्वं चरणभुविबनर्निर्गतो वल्गिहासी हस्तप्राप्योऽप्यखम्यो झडति मुनिजन एव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नाभात्य भूमौ पुनरभिपदद तस्य तन्दं सजीवं मूलादुन्मूल्य धन्मूल कहमहितमः मौतिगान्यात्ममित्रे प्रादस्वं हारमेऽपि ललितविरचितं राधिकायै दिशेति
कृष्णानं तन्दमंसे युतमदहलिना रङ्गमङ्गाभिसन्दं त्वामङ्गल्याङ्गपङ्गी रभसहृतमनो लोचना वीक्षलोगा को धन्यो ननुन्दो नहि नहि पशुभा लाङ्गना नो न सोदा नो धन्याक्षणं स्वं त्रिजगतवयमे भेदि सर्वे सशंसु पूर्णं ब्रह्मा वै साक्षा निरवधि परमानन्दसान्द्रं प्रहासं गोपेषु त्वं व्यलासि नलु खलु बहुजनै तावदा वेदितो भू दृष्ट्वा तत्त्वां तदेत्मां प्रथमुपगमते पुण्यकाले जनौका पूर्णानन्दाविभावा सरसमभिजुगुज तत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीर तदनु नृपकिरा मुष्टिको मुष्टिशाली वामाराञ्चाभिभेदे जडजडिदिमिदो मुष्टिपादादिरूक्षम् उत्पादापादनागा क्षणविवितरण न्यासदां तत्र चेत्रं मृत्यो प्रागेव मल्ल प्रभुरमदयिदं पुरिसो बन्धमोक्षा आदिकष्टं कुमारो सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कडोरौ नत्रक्षामे वृजामा त्वरितमिविधने पाशमाणे तदानी चाणूरं तं करोद्ब्राह्मण विगलसदुसं बोधयामासिदोव्या बिष्टो बुन्मुष्टिकोऽपि धृतमदहलिना नष्टिशिष्टै तदा वे कामः संस्कार्य दूर्यं कलमतिरवदन् कार्यमार्यां पितृसा आहुन्दं व्याप्तमूर्ते तव स समशिष दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव किरीं मञ्जुमञ्जुण्डिनञ्ज कट्कव्यार्ककसुङ्ग रहमहिषगडा प्राक्रही रौक्रसेनी सत्यो निष्पिष्टसन्धि भुविनभिरभिदं भात्यस्योभिराष्टा दय्याया भात्यदैव त्वपुरिपतिता नागिनां पुष्पवृष्टि किं त्रिं ब्रूमैस्तधानि सततमभिबिह त्वत्तदामाप्सभेजे सायुज्यं त्वत्पदोता परमपरमयुं वासना कालनमे तत्प्रातॄनष्टविश्वा धृतमदपितरो सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमोचै यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानै भक्तानामुत्तमुञ्च तव मम गुरुगो आप्निनीदं सहायं लब्ध्वा दुष्टो न कर्या भवनपुरपते रुन्दिमे सर्वरोगान् दशகம் 76 उत्तव दौर्दर्यम् कत्वा सान्दी पनिमदसा दुःषष्मात्रभोऽपि सर्वज्ञत्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रां नष्टां यमननिलयान् आकृदां दक्षिणार्थं तत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्जसन्यं स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपतर्ष प्रेमभारा पृणन्ना कारुण्येन त्वमभिविवस प्राहिणो उत्तमं तं किञ्जामुंशे परमसुहृदै भक्तवर्याय दासं भक्त्योद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् तन्माहात्म्यं प्रतिमभिसुनं गोकुलं प्राप्य सायं तत्वार्ताभिर्बहुसुरमय्या आसनन्दं यशोदा प्रादद्
दृष्ट्वा मणिमयरथं संगीता पङ्कजाक्ष श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयो दृष्ट्वा सैनं त्वदुपलमस वेषुपूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसिता उच्चिकैतानिदानी वृद्धा लाभ कथमि पुनर तत्कथं वासमोऽसु सौजन्यादिन् निजपरमिदान् आबलं विस्मरन्त्य श्रीम किं त्वं पितृजनकृते प्रेक्षितो निर्दयेन वासो गान्धो नरकसुतर्सम् आहरे नादपाया आसेलेषाणममृतबभुषो हन्तदे सुम्बनाना मुन्मादानां गुहवससा विस्मरे कान्तकापा रासक्रीडा लुलितललितं विस्सलदत्केशपासं मन्दोद्भिन्न श्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्दे सकृदि समः लिङ्गितुं सच्चयेदि प्रेमोन्मादात् भुवनमदन तत्प्रियात्मां विलेभू एवं प्राये विवसवसनैर् आकुला गोपिकास्ता त्वत्सेन्देशे प्रकृतिदमनयन् सोदविज्ञानगर्भै भूयस्ताभिर्मुदिततमभिः स्वान्मयीभिर्विदुभिः तद्दद्वार्ता सरसमनय कानिचित् पासराणि तत्प्रोत्काने सहितमनिशं सर्वदो गेहकृत्यं तत्त्वाद्वैव प्रसरतिमिति स्वस्वदै स्वाबलाभ श्रेष्ठाप्राय तदनुगृहद तन्मयं सर्वमेकं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहतदिगं विस्मयादोत्तवेयं राधाया मे प्रियतममितं मत्प्रियैवं प्रवीदि तं किं मौनो कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इद्यादेव प्रवदति सखी तत्प्रियो निर्जने मा मित्तं बाधे रमयदमयं तत्प्रिया मुद्बलाशी येषा मित्रा कनुगमहनं केवलं कार्यपराध विश्लेषमरणं दृढदा सम्भवा मास्तु खेद ब्रह्मानन्दे मिलितनसिरा सङ्गमो वा वियोग तुल्यो वा यदितविकरा स्वीकरा निर्व्यदास्ता एवं भक्ति सकलभुवने नेक्षिदा निःसृदा वा किं शास्त्रौगे किमह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु दिव्यानन्द कुलमुपगतं गोकुलातुत्तमं तं दृष्ट्वा हर्षो गुरुपुरपदे पाहि मामयोगात् दशकं 77 उपसोलोक उत्पत्ति जरासन्ध आदि युद्धं सह सैन्द्रत्य तन्निचरं स्मरादुराया यादो भुसूलमुमिदत्तवने ससार्धम् आवासं तदुभगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदनावसा सज्जिकाया उभक्ते द्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भरकम्बरम्योदरा विवितमानमदाददधि मुदा रहसितां रमयाञ्जकृषे सुगा पृष्टा वां पुनर्सा वृणो बधिवरागी भूयद्दया सुरदमेव निशान्तरेषु सायुज्यमत्पदपदे पुरयेव कामं सामिभ्य तत्पनिसमिद्य न प्रविद तदो भवान् देवनिशासुकासिन् मृगे त्रिसिं तां निर्भमं विनोदयन् अदादुपश्लेघ इति श्रितं सुखं स नारदस्मात् तदन्द्रिविद्विभौ अक्रूरमन्दिरमिते फलदोद्भवाप्येः मत्पच्चिदो बहुनतो मुदिरेण तेन येनं विसृज्य विवनागत पाण्डवैय वृत्तं विभोति तदा धृतराष्ट्रश्रेष्ठा
विघाताज्जामादो परमसुहृदो भोजनप्रदे जरासन्धेरुन्द ननवधिरुषृन्दा मधुररां रदात्येद्योलप्ते कदिभयबलत्वम्बलयद त्रयोविंशत्यक्षौ अणितबधुवनीदं समहृता पत्तं फलादतबलेन फलोत्तरं तं भूयो बलत्यमरसेन मुमोचिदैनं निःशेषिदच्च सममापृतविश्वसैज्ञा गोन्यस्तदेहि फलभरुषः वांसदानी पक्नस्य लग्नहृदयोऽभिनिर्वैपृणुन्नो युद्धं दया विदितषोडशकृत्व एवम् औक्षीणि शिवशिवास्य जगन्न विष्णो सम्भोजसैगनिवधिर्सरितं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषितं दृष्ट्वा पुरोदयवनं यवनत्रिकोट्या दृष्टा विदाप्य पुरमासु भयोधिमध्ये तत्रादयोगफलद स्वजनाननैषी पद्मायां त्वं बद्ममाली सहितविबभरा निर्गतो तापमानो म्लेसे सेनानुयादो वदसुकृतिभिः नेन शैलैन्यलैषी सुब्धेनाङ्घर्यह्यदेन कृतमदमुगसुन् तेन भस्मीकृशेऽस्मिन् भूभायास्मै गुहान्ते सुलिलति वपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे जक्ष्वाहोऽहं विरक्तो शमकिल नृपसे स्वावप्रासादकाङ्क्षी हादे देवी सुबन्धं परविधिदुषिता निःस्पृशं वीक्षहृक्यन् मुक्ते दुल्याञ्ज भक्ति दशकमलमला मोक्षमप्यासु दत्त्वा कार्यं हिं स्वासिदत्दै तव इति सतता प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनु मधुरां कत्वा हत्वा समुं जनवाकृता मगधपदिना मार्गे सैन्ये पुरे वनिवारित सरमविजयं दर्भास्या मे प्रदाय पलायिदो जलति नगरीं यादो पादालये स्मर पाहि माम् दशकं 78 द्वारकावास रुक्मणी सन्देश प्राप्तिपदः त्रिधवर्तकी वर्तक कौशलं त्रिदशसत्समस्तविभूतिम जलतमर्त्यकतं तमभूषयो नवपुरं वपुरञ्जितरोषिष तुदुषिरेवत भूप्रतरेवतीं हलप्रदे दनयां विदशासन महितमुत्सवघोषमभूभुष समुदिदैर्मुदिदैः सह यादवै अदविदर्पसुदं खलु रुक्मणी पर्णयीं दयितेव सहादरे स्वयमधिस्तव सेदिमहि भुजे स्वदमसा तमसाधु मुभाश्रयन् शिरदरुत्प्रणयाद्वै बालिकाः सबधिकाङ्क्षदपङ्गसमाकुल तव निवेदयुधं द्विजमादिश स्वगदनं कदनङ्गविनिर्मिदा द्विजसुधोऽभिसदूर्णमुभाययौ तव पुरं किदुरासदुरासदं मुदववाससादरभूजित स्वबतदा भवदा बहृदा स्वयं ससभबन्धवमोचत कुण्डिने नृपसुधा खलु राजितरुक्मणी दयुसमसुगया निजधीरदा अहिदया हिदया प्रहदिश्चयं तव हृदास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल सेदि निर्बातुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रगजते जगदेकपदे दया अचरणं यदि मां त्वमभेषसे सबधि जीवितमेव जहाम्यहम् इति किरासुदनोर्दनोत्पृशं सुहृदयं हृदयं तव कादरम् अगदयस्तव मैथुनमयि सखे तदिदका मम मन्मदवेदन नृपसमक्षमुपेत्य सराम्यहं तदीयतां तयिदामसि देशना प्रतिमुदेन सदेन समं तदा रदगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् विविधुनां धनुमागिलपादम् दशकं 79 रुक्मणी हरणं पलसमे दलनु अतगबा
भवान् पुरगमाहद भीष्मगगानित द्विजसुधां ददुभागमवादिनं दृहरसा तरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष भवत्पुर नृपसुधस्य निशम्यसचेष्टितं विबलगोदजुषाम्बरवासिनां श्रुतिकृतैरदिदैरगमन्नि च तदनुबन्धितनुम्बदिमुखी स्वां पिहितमङ्गलभूषणबासुरा निगरमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरदः पुरदः स्फुटवामृता कुलदुभीरुबधेयकुमारिका किरिसुधां परिभोज ससादरं मुहुर्यासद तत्पदपङ्कजे निबदिता पतितां तव केवलं समबलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं दयिसस्थिते नृपसुधा निरकार्तिकराज्ययान् सुरसुरां रुसजित्तदेमुङ्गमा भुवनमोहनरूपरुसाददा विविशता किल राजकदाम्बया त्वमपि देवकटाक्षविमोक्षणे प्रमदया मदया जकृषे मनाक् क्वनु कमिष्यसि तन्द्रमुगीतिदां सरसमेध्यकरेण हरक्षण समधिरोप्यरदं त्वमवाकृता भुवि तदो विदतो निनदोद्विषं क्वनु कदः पशुपालयिदीकृता कृदरणा यदि पेच्चचिजाप्रभा न दुभवानुदसाल्यदैरहो पिसनुगै सुनिकैरिव केसरी तदनु रुक्मणि मीनकमामहे पदमुपेक्ष निबत्य विरूपयन् हृदममं परिमुच्य बलोग्धभि पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयगौदुगजृम्बितमन्मदाम् अरमय खलु नाद यदा सुखं रहसितां हसितां सुलसन्मुगे विवितनर्मभिरेवमहिर्निशं प्रमदमागलयन् पुनरेगता रुजुमते किल भक्तिकरा भवान् भरदनो रदनो दिलिलोललां तदिदनैगदलोलनकौशलै प्रणयिनीमधिकं सुगयन्मिमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानिन प्रगददां कदतान्तिमभागुरु. दशகம் 80 स्यमन्दः उपाख्यानम् सत्राजिदेत्तमदलुप्तवतर्कलब्धं दिव्यं समन्दहमणिन् भगवन्नयासि तत्कारणं बहुविधं मम बाधिदूनं तस्यात्मजं द्वयिरदां सलदो बवूढम् अत्तां तं दुभ्या मणिवरमनेनालभमनसा प्रसेनस्तप्राद कलिभुवि वहन् प्राभमृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सम्प्रमवसा कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमभिसा पालाय तदिवा सत्संसत्राज्ये किरमनुजानास्त्वा मणिहरं जनानां बीयोषा भवति गुणिना दोषकणिका तदस्रज्ञोऽपि स्वजन्नासितो मार्गणपुर प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमभैकतोऽपि कविगुहा भवन्तमविघातयन् भया स्वयं जाम्बवा मुकुन्दचरणं हि माम् अह्यनोत्तमिद्यालभन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः शिरं तव समर्शनं व्यथितभक्तिचूडामणि पुत्पादतेन तत्तां नवरमणिं वरमणिं सवर्गणन् अनुग्रणनमुगामा सपदि सज्जात्ये मणिप्रधा तदनु सगलो विलोला विलोचना तुहितरमहो धीमान् पामां किरैव परार्पिता अदितमणिना दुप्यं लभ्यं समेध्य भवानभि प्रमिददमना तस्यै बाधान्मणि हनाशय
लीलाकुलां रमयति द्वयी स्थाप्य भामा सत्यभामा कौदेत्याक्रदयाद गुरुप्रयादे हि गान्धिनये कृतवर्मकिरा निबध्याः सत्राजितं सदनुर्मणिमा जहार सोगद्गुरून् भगतामवलोक्य कान्तं हत्वा धृतं सदनं समहर्ष्य हस्तां रत्ने ससङ्गैव मैथिलिके हमेद्ये रामो कदां समशिशिष्य तराद्राष्ट्राम् अक्रूर एष भगवन् भवदच्चियैव सत्राजित कुसरिदस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरदो मणिमना कृतवान् पुरस्तं तस्यैव भूतिमुपदातु मुदि प्रबन्धे भक्तद्वये स्थिरदरा सहि कान्तिनेय तस्यैव कावदमदे कदमी स जाता विज्ञानवां प्रसमभानहमिद्योदीर्णं गर्वं त्रिवं समयुधं भवदा कृदैव यादं भयेद कृतवर्मयुधं पुनस्त आहूय तद्विनिहितं समणिं प्रहास्य तत्रैव स्वर्धवरदे विनिधाय दुष्यं पामाकुशान्तरसय भवने सपाय